Good morning, everyone. Welcome to my channel. I hope you all are doing well. So, in this video, I'm sharing with you my productive Monday morning to lunch routine. So, it's around 6:30 right now, and the first thing I'm gonna do is make a chai for me as well as my husband takes it with him. So, I prepare the breakfast at this time for him as well as pack his lunch. And once he leave, it's me time. So I sit, enjoy my tea as well as watch news. And then around 7:30, Aryan wakes up. So then I make whatever he wants to eat that day for breakfast. So today he chose this oatmeal. I'm using the Quaker brand here. This one is the quick oat. It just hardly take 2 minutes to make it. So that's what he's gonna have for breakfast. And right after that, I started cleaning my freeze because it was overdue. I need to organize everything. So let me walk you through and let me show you how I organize my freeze. Now, first of all, I took all the things out from it, clean it properly, and yes, I did not record that because it's a normal process, right? There is nothing exciting to see. So let me walk you through and show you how I did it. Now, as you can see, yes, right now my freeze is empty because it's time for grocery shopping. But if you follow me for some time, you guys know that I absolutely love this acrylic pen. The reason I like this most is because, first of all, it's clear. So whatever is in there, you can see it clearly, especially for the kids, because I've been using this from very long time, ever since my kids were young. So it's easy for them to see it, what's in there. So here in this one, and yes, first of all, if you guys buy this, get the one that has like a handle, so it's easy to pull than this one. Now, this one recently I bought it, but this one I used to have it. Now I'm not a big fan of this because here you have to put your finger in there. And let's say if you have something there, it's not that easy to pull. Instead of like this one, it's really easy to pull. So I like this kind of one. But let's start from the top. So here I do have some garlic. In this one I have some dry fruits in here. And here I have all the Taco Bell sauce as well as my lemon juice. Now that one I don't use it much. And I put this stuff up here, the one that I'm not going to use in everyday basis basically. So those are the things is up there. Now in here I have some sparkling water as well as the Pepsi, and these are the smoothie. Yes, my kids are teenager, but still they like this. And I like to buy this once in a while, and I really like it too. So all those drinks are in here. And here I have my all the yogurt. So back there is the Chobani one. These are the Indian brand. Here I have some dip as well as the malais back there. So all those related items, I try to keep it together. So whenever I want something, I know where I can find it. Now this one is empty. I do have some spinach there. And here I have some mango as well as the mango pulp. This drawer, I do have some vegetables. And as I mentioned, it's time for me to do some grocery shopping. That's why you don't see much. But I like to keep my vegetables in this kind of bag because it keeps them fresh for a very long time, and I got those from Amazon. Now in this drawer I do have some paneer as well as the koya butter. So like I say, those related item I like to keep it together. And again, I'm using this acrylic bin. Now this is the new one, I bought it. So there were two in one set, and as you can see I have some avocado as well as the lemon. This one was actually filled with the lemon because I like to drink lemon water every single day, but I just have one lemon left now. These are the chilies that grows in my garden, and in this last one I have some cheese. These are the mole cheese. So that's how I organize this drawer. And on this side I have some backup milk as well as my dark chocolate is there, Mountain Dew, some the ketchup meals, those kind of things. The sweet chutney is there. And on this side I do have this mixed berry jam as well as some random stuff up here.
It has some rose water, maple syrup, and in here I have a kesar. Now this one I bought it from Amazon. It comes in this cute bag as well as comes with this spoon. I will link it down below in the description box. As I mentioned, it's really good. It smells good too. Um, and here I have this mixed berry jam as well as the pomegranate juice as well as the milk. Now the milk which I'm using currently, I put it over here, and the one that I have a backup, I put it on this side. So when this one comes on the other side, that means I need to buy more milk. But yeah, that's it. That's how I organize my freeze. And like I say, it's time for me to do some grocery shopping. But I like to see my freeze empty. I don't like to just shove everything in there. And especially when it's organized like this, you can see everything what you have. नीचे का काम तो हो गया खत्म, बस यहाँ पे सब लॉन्ड्री लेके बैठी हूँ। फोल्ड करने कपड़े मुझे बाकी है अभी, क्योंकि कल मेरी लॉन्ड्री तो हो गई थी, पर जैसे ही कपड़े ड्राई होते गए ना, सब यहाँ पे मैंने डंप कर दिया कि मैं शांति से बैठ के फोल्ड करूँगी। तो रात को सोचा था कि मैं कर लूँगी, पर फिर इतनी थकी थी तो सब कुछ ऐसे ही छोड़ के मैं सो गई, क्योंकि कल हमने पूरा ये मेरा हस्बैंड का क्लोजेट है ना, वो पूरा निकाला था, वो ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद मैं अपना कर रही थी। तो स्पेशली मेरे में मेरी जो ज्वेलरी है ना, वो सब जगह यहाँ वहाँ पड़ी होती है, क्योंकि रात को मैं सोने आऊँ ना तो इयररिंग्स और ब्रेसलेट है वो मैं निकाल देती हूँ। तो कभी इस टेबल पे होता है, कभी मेरे बाथरूम में होता है, कभी नीचे किचन में हो तो किचन में मैं निकाल देती हूँ। तो वीक में एक बार सब जगह से मैं जाके ढूंढ के फिर यहाँ पे सब कुछ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। तो बस लेके बैठी थी मैं ज्वेलरी, पर फिर वो होता है ना कि एक चीज़ आप ठीक करने जाओ, कुछ और आपको दिखाई देता है, तो वो ठीक करने बैठ जाओ। तो फिर बस इसके बाद जो पर्सेस वगैरह है वो करने में बैठ गई, फिर थोड़ा-सा कपड़े का करना था वो भी किया। पर फिर भी अभी मैस है, क्योंकि मैं दिखा नहीं एक्चुअली सकती आपको, जैसे यहाँ पे दिख रहे हो आप। काफ़ी अभी तो मैस है, क्योंकि फिर ये सारे कपड़े यहाँ पे आ रहे थे ना, तो फिर जो भी था ना बस ऐसे ही मैंने डंप कर दिया कि एक बार ये कपड़ा हो जाएगा, फोल्ड करके मैं लॉन्ड्री को रख दूंगी ना, उसके बाद फिर ये सब कुछ करूँगी। तो बस आज है मंडे मॉर्निंग, एंड थैंक यू सो मच गाइस। आज मैंने वीडियो अपलोड किया एंड यू वोंट बिलीव, बट इट फील्स सो गुड टू बी बैक। क्योंकि जब मैं नहीं करती हूँ, बनाती हूँ वीडियो, तो ऑफ कोर्स आई आल्सो मिस यू गाइस टू, क्योंकि दैट्स द ओनली वे आई कैन इंटरेक्ट विद यू गाइस। तो मैं भी ऑब्वियसली आपको मिस कर रही थी, पर लाइक आई से कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको कुछ करने का मन नहीं होता है, एंड दैट्स फाइन। आई लाइक टू गिव दैट टाइम टू माई सेल्फ कि इट्स ओके, इट डजंट हैव टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम। क्योंकि पहले मेरा वो था कि नहीं, सब कुछ अपने टाइम पे हो जाना चाहिए, सब चीज़ें अपनी जगह पे होनी चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए। अब मैं इतनी स्ट्रेस उसके बारे में नहीं लेती हूँ कि ठीक है, आई एम गिविंग माई 100%। पर कभी होता है कि यू नो ना ही आपको टाइम मिला, कुछ और आ गया, कुछ है, अगर ना हो सका तो ना ही सही। And thank you so much guys. Raj is doing much better now. I would say कि उसके 2 दिन ऐसे थोड़े खराब गए, पर अभी तो उसकी तबीयत बहुत ही बेटर है पहले से। तो आई वाज लाइक थैंक गॉड, अदरवाइज लाइक आई से कि अगर जो टेम्परेचर होता ना तो ख़त्म, तो मैं वहाँ पहुँच ही गई होती। पर ऑफ कोर्स उन लोगों के पास वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह सब कुछ है, तो अगर आपको दिखाना है कुछ है तो डॉक्टर इज़ अवेलेबल। But he's like कि mom is just a normal thing, and like he mentioned कि वहाँ पे 90% जो बच्चे थे वो sick थे। तो जब आपके बच्चे ऐसे फर्स्ट टाइम कॉलेज जा रहे हैं ना, तो if you read all those blogs and everything, they also mention कि it's quite a normal to kid to get sick first time, क्योंकि it's a new environment, सब कुछ नया होता है ना। तो जैसे किंडरगार्टन बच्चा शुरू करता है तो कैसा होता है कि वो बच्चा 99% होता ही है कि वो बीमार होगा, लाइक ऐसे कोई भी वायरल उसको इन्फेक्शन होगा, कुछ ऐसा तो कुछ होता ही है। मेरे बच्चों के साथ भी हुआ था। तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, इट्स। पर यार हम जैसे माए, हमें स्पेशली बच्चों को इतनी दूर हम भेजते हैं, और उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि उसकी तबीयत खराब है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस तो हमें आ ही जाता है। तो
राज के साथ भी मैं जब बात करूँ ना तो पहला मेरा उसको क्वेश्चन यही होता है कि राज डिड यू ईट, एंड सेकंड वो होता है कि हाउ आर यू फीलिंग नाउ। तो कल मैंने उसको पूछा ना तो बोल्ड टेक्स्ट करके उसने मुझे भेजा कि मम स्टॉप वरिंग अबाउट मी। आई वाज लाइक बेटा तेरे जब बच्चे होंगे ना तब तुझे पता चलेगा, अभी तुझे नहीं कुछ पता चलेगा। But like I say, he's doing much better. He's enjoying actually. उसकी शुरू के 2 दिन थे ना, 2-3 दिन, तब उसको थोड़ा हार्ड लगा, तब वो बहुत ही मिस कर रहा था घर को। क्योंकि उस टाइम पे कोई उसके फ्रेंड्स नहीं थे ना, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि उसको कोई पहचानता हो करके, ऐसा तो कोई है नहीं। सबको वो फर्स्ट टाइम मिला है। तो ऑब्वियसली थोड़ा तो वो होता ही है। पर 2-3 दिन के बाद जैसे ही उसका उसके फ्रेंड्स बनने शुरू हो गए ना, तो फिर उसके बाद नाउ ही इज एंजॉयिंग अ लॉट। अभी तो कुछ भी उसकी एक्टिविटीज कुछ भी होता है ना, तो ही विल टेक्स्ट मी, इज लाइक ओके मॉम, आई एम बैक बट नाउ आई एम गोइंग फॉर दिस एक्टिविटी करके। तो कभी कभी तो इतना बिजी होता है कि रात तक हमें टाइम भी नहीं मिलता उसके साथ बात करने का। But he's enjoying a lot, and I was like, it's a good, it's a good experience for all of us कि next year अब जाएगा तो फिर वो फर्स्ट टाइम शॉक मिले, इससे अच्छा कि ये हमारे लिए अभी अच्छा हो गया। सुबह सुबह में अगर आपका मेजोरिटी काम खत्म हो जाए ना तो लगता है कि आज का दिन प्रोडक्टिव रहेगा। क्योंकि ये मेरा जो फ्रीज है ना, काफी टाइम से मुझे ऑर्गेनाइज करना था, तो आज वो हो गया, मेरी लॉन्ड्री फोल्ड हो गई। तो काफ़ी सारा काम आज सुबह-सुबह मेरा अच्छी तरीके से ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी तो बजे 11। तो 11 बजे से पहले ये सारा हो गया। और वो मैंने जो बिन बताया ना आपको, एक्रिलिक बिन जो फ्रीज़ में मैंने ऑर्गेनाइज़ सब कुछ किया है, वो बिन मैं हर जगह पे यूज़ करती हूँ, जहाँ पे भी मुझे लगता है कि मुझे ऑर्गेनाइज़ प्रॉपर्ली कुछ करना है। तो उसमें पहला तो क्या होता है कि वो क्लियर है, राइट? तो अंदर कुछ भी आपने रखा है वो दिखाई देगा कि क्या है। मेरे पेंट्री में भी आप देखोगे, वहाँ भी वो मैंने यूज़ किए हुए हैं। यहाँ मेकअप के लिए भी मैं वो यूज़ करती हूँ। और क्लीन करने में भी बहुत इजी है, जस्ट रेगुलर सोप से आप उसको प्रॉपर क्लीन कर दो तो वो बहुत ही इजी हो जाता है। तो मेकअप मेरा जो रहता है वो बार जो मेरे पास थोड़ा है, अंदर है, सब कुछ मैं बस उसी में उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। सो चलते हैं नीचे, बनाते हैं लंच, और आज लंच में मैं कुछ अलग बना रही हूँ। तो सोच रही हूँ कि समोसा रोल बना दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने समोसा बनाए नहीं है। और आर्यन को समोसे बहुत पसंद है, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग रेगुलर समोसा, आई वाज थिंकिंग आई विल जस्ट मेक द समोसा रोल। तो चलते हैं नीचे फटाफट, लाइक ऐसे ही अभी 11:30 हुए हैं, अभी उसका लंच टाइम है 12 बजे का। तो वो नीचे आएगा, उससे पहले होपफुली हो जाएगा। सो लेट्स गो। So to make this samosa roll, first of all, we're gonna go ahead and make the outer layer. So here I'm using 2 cup all-purpose flour, that is the maida. Add salt to taste as well as 3 tablespoon ghee. You can use oil also. If you are using oil, then you need about 4 tablespoon. Mix everything very well, and then I'm gonna use about half a cup water to make a stiff dough out of it. You want to be very careful when you are adding the water because this dough has to be very stiff, otherwise the outer layer won't be crispy at all. Now I'm gonna cover this dough and keep it on one side for about 10 to 15 minutes. Meanwhile, we'll go ahead and make the stuffing. So here in a pan, do have some oil. Into that, I'm adding some cumin seed, pinch of hing, green chilies, and half a cup green peas. Also, next I'm adding some coriander seeds and the red chilies, the whole red chilies. I roughly crush it into the blender. If you want to see the detailed recipe of this samosa stuffing, I do have a separate video. I'm going to link it down below in the description box. And here I have about 3 to 4, I would say, medium-sized potato, which I boil. So go ahead and add that and add salt to taste. And here I have the cornstarch. The reason we need to add the cornstarch in this stuffing is because when we make the roll, we want to make sure that when we fry it, it doesn't come out. So of course, if you are making regular samosa, then you don't need to add the cornstarch. But just because we are making a roll, I want to be careful. Otherwise, when you fry it, it's just going to come out. And here I took some all purpose flour, add some water in it, make the thick paste out of it. So that way, when we make the roll, we can seal the roll with that.
So now I'm gonna go ahead and roll this. Now the key to get the very crispy outer layer, you want your this outer layer to be very thin. So it will take few minutes because you want to make sure that it's very thin. So it took me, I would say, about 2 to 3 minutes to roll one of this. But it worth all the efforts, guys, believe me, because the outer layer came out so crunchy. And here you can see my hand through it. So you want to roll it that thin. And now basically I'm just going to make either the square or the rectangle shape out of it. So that way I can make proper strips and then I can roll it. So it's all depend on you how big or small you want your roll to be. I made on the smaller size, so these are perfect for the appetizer. And like I mentioned, the proper samosa recipe video, I'm gonna link it down below. And guys, if you haven't watched my shortcut to Indian dinner party menu, you have to watch that video. I'm gonna link it down below. But especially if you like to entertain but you don't want to get stuck in the kitchen all day long, then definitely watch that video because I'm sure that will be so helpful. So now I'm gonna go ahead and roll this. Now when you roll it, you want to be gentle, but still you want to roll it very tightly. So that way, when you fry it, it doesn't get open. And of course, we're gonna apply the glue that we made. So like I say, it's nothing but the all-purpose flour and the water. So you want to make sure that it's thick paste. So that way it sticks properly. And now I'm gonna go ahead and finish all the roll and then we'll go ahead and deep fry this. So here all our rolls are ready and the paste which I made it from all-purpose flour and the water, I add more water in it and just make the thin batter out of it. Now the reason we want to do this is because when we deep fry this roll, we want to make sure the stuffing doesn't get burned because as you can see, you can still see the stuffing from both sides. So when we deep fry this roll on low to medium flame for about 5 to 6 minutes, chances are this stuffing will get burned. So for that reason, I'm just gonna dip both side of the roll into this batter and go ahead and deep fry this. And like I mentioned, you want to deep fry this on low to medium flame for about 5 to 6 minutes because we want to make sure that the outer layer get crunchy. So make sure the temperature is not too high. Otherwise, outer layer will get cooked very quickly, but then it won't be crunchy at all. So here our samosa roll is ready. They are perfectly crunchy and taste really good. You can serve this with the green chutney and the sweet chutney. तो अभी बजे हैं पौने 4 मैं आपको बताती हूँ सो एज यू कैन सी इट्स 3:41 राइट नाउ और मैं यहाँ पे बस चाय गरम कर रही हूँ क्योंकि सुबह में आज मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा बना ली थी तो सोचा कि सब अब मेरा काम ख़त्म हो गया है चाय पी लूँ थोड़ी 10-15 मिनट बैठूँगी उसके बाद फिर डिनर बनाऊँगी तो आज डिनर में बहुत सिंपल बन रहा है जो मूंग की दाल हम बनाते हैं उसके साथ मैं राइस बना रही हूँ एंड दैट्स अबाउट इट पर ये जो समोसा रोल मैंने बनाए ना गाइस यू हैव टू ट्राई दैट रेसिपी बहुत ही टेस्टी बने और 2 महीने रखे अगर मेरे हस्बैंड को ट्राई करना है तो क्योंकि आजकल वो ग्लूटेन फ्री खाना खा रहे हैं तो उसमें मैदा है ना तो उसमें तो ग्लूटेन है ही तो वो शायद ना खाएंगे वो नहीं खाएंगे तो ऑब्वियसली आर्यन खा जाएगा क्योंकि बहुत ही टेस्टी बने हैं so that's it, guys. I hope you guys have enjoyed today's video. Yes, definitely, it was really productive for me. I still have my pantry to take care of it because it is again hot mess. So I'll see once I'm done with this. I'll probably take care of that too. But I hope you guys have enjoyed today's video. Thank you so much again, guys, for everything. Because as I get chance, I'm also reading all your comments on today's video. Um, so
Again, thank you so much. Take care, and I will see you soon in my next video. Bye.